So in my office, people used to tease me in CNN कि जैसे गया है वर्ल्ड कप कवर करने 2015 का और आया है कहीं से तो बोलते थे यू आर हाँ, विजिटिंग इंडिया. वर्ल्ड कप का ड्रामा खत्म हुआ कि अभी मूव ऑन होना बाकी है? Yeah, that was an incredible ride. I think the best part was the travel. Trust me, one time I was in LA, then coming back, going to Japan and going to New Zealand and going to all over the world, going to southern France. From there, some other work assignments. I've met everyone from Dharamji to Bachchan Saab to Jennifer Lawrence to Ryan Reynolds and Ryan Gosling, David Warner to Virat Kohli to everyone. The biggest lesson that I've learned from all of these stalwarts in their own fields is that just be yourself. I think Jitesh Sharma deserves more chances. Even Shivam Dubey. शिवम दुबे कोई भी मैच नहीं खिलाया. हार्दिक पांड्या को कोई रिप्लेसमेंट ही नहीं तैयार करते. फिर बोलते हैं भाई एक ही प्लेयर है, एक ही प्लेयर. सो फॉर एन एंटरप्रेन्योर एंड फॉर एन इन्फ्लुएंसर आल्सो यू हैव टू बी द बेस्ट सेल्स पर्सन फर्स्ट. आपको अपने आप को बेचना आना चाहिए. आपको ऑडियंस को भी अपने आप को बेचना है. Before I begin this podcast, I have a small request. If you've ever found value through this podcast or the other videos that I've been sharing on this channel, please do me a small favor. Please hit that subscribe button, like the videos, leave a comment, hit the bell icon. If you have any questions that you'd like me to ask to the next guest, please let me know in the comments as well. I would be happy to help you. It would mean the world to me if you help me grow this podcast, and I promise to bring on more guests to bring you more value. Now, back to the podcast. In this episode, we have Sushant Mehta, founder of Beast Studios, has almost 2 decades of experience in journalism, and lately you'd have heard him screaming supporting the Indian cricket team on Sports Yaari. Sushant bhai, thanks for coming on to this podcast. कैसे हो? All well, Akash. आप बताइए आप कैसे? Thank बस you for बहुत having बढ़िया me. सर. Sir, for the few people who don't know about you, आपके बारे में कुछ, can you tell us your story, your background? I think I started with the NDTV actually. I was working in the audience coordination department, worked there as a college kid, used to get $200 a day to call in the audience for shows like The Big Fight and We the People, जो बरखा दत्त करती थी या राजदीप करते थे. तो बच्चे थे और ऑडियंस बुलाते थे. 200 रुपए दिन का मिलता था कॉलेज में. Then when I went for my exams, came back, then I joined CNN IBN. That time it was not CNN News 18, it was CNN IBN. And joined there, worked as a guest coordinator with Rajdeep Sardesai for a year. Then I worked in the entertainment department about 10 years, a decade, entertainment and sports. So I covered a lot of events like the Cannes Film Festival, then I covered the London Olympics, then I covered the Cricket World Cup 2015, and all over the world. You know, बहुत सारी फिल्म्स के लिए इंटरव्यूज एंड जैसे मैंने बताया आई वाज द फर्स्ट पर्सन हु इंटरव्यूड मैरी कॉम इन ओलंपिक्स 2015 फिर ओलंपिक्स 2012 सॉरी and then cricket world cup also 2015 I covered from New Zealand, so it's been a good ride. Then ultimately I joined India Today after I think 10-12 years with CNN IBN. Then I was the entertainment editor there, and I also used to host the cricket show, which was lights, camera, action with Sunny Bhai, Sunil Gavaskar, and Harbhajan Singh. Then very famously, I did 2-3 months on Sports Tuck, which was the YouTube wing of India Today, and then I opened my own venture, Sports Yaari and Cinema Beast, and so far so good. यार चल रहे हैं कर रहे हैं. But we'll chop it up. So many like different stories over there. Like, what was the best part of your job when you were working in the journalism industry, like in your job? Yeah, that was an incredible ride, and I am so grateful to all my seniors who've given me so many opportunities over the years. I think the best part was the travel. I always wanted to travel a lot, and I think somewhere down the line, if I look back, I sort of very greedily went for entertainment. Either I would have gone for sports or entertainment, but I chose entertainment because मुझे लगा यार इसमें travel करने बड़ा मिलता है. Anyway, I love movies. And so trust me, one time I was in LA, then coming back, going to Japan and going to New Zealand and going to, all over the world, going to southern France and from there some other work assignments. So in my office, people used to tease me in CNN कि जैसे गया है वर्ल्ड कप कवर करने 2015 का और आया है कहीं से तो बोलते थे यू आर विजिटिंग इंडिया. तू यहाँ तो रहता ही नहीं है, ऑफिस में दिखता ही नहीं है. सो जैसे मैंने बोला, फॉर अ 20-year-old kid, फॉर अ 21-year-old kid टू गो फ्रॉम ब्राजील, रियो डी जेनेरो में हम घूम रहे हैं एकदम से वापस आ रहे हैं, देन टू गो टू केप टाउन and come back for खतरों के खिलाड़ी and then going somewhere. I think it was an incredible journey. That's why I'm so grateful to Ritu Kapoor and Rajdeep Sardesai and
All my seniors, Vinay Tiwari, Radhakrishnan Nair, God bless him, all my seniors at CNN, and then also very grateful at India Today. They've been more than kind. They Yeah. were very, very kind actually. I was the entertainment editor there, and again, so incredible ride at both Yeah. networks. Like you have met a lot of people, like athletes from every kind of industry. What was the biggest Yeah. takeaway that you had, like biggest lesson? Biggest lesson. I think biggest lesson is biggest lesson from everyone that I've seen actually, and I've met everyone, as you mentioned, from Dharamji to Bachchan Saab to, let's say, Jennifer Lawrence to Reynolds and Ryan Gosling to everyone, David Warner to Virat Kohli to everyone. So the biggest lesson that I've learned from all of these, you know, stalwarts in their own fields is that just be yourself. Be Hmm. yourself and do yourself. Yeah. कुछ उसमें इधर-उधर किसी को देखने की ज़रूरत नहीं है, किसी की तरह बनने की ज़रूरत नहीं है। आपको भगवान ने बहुत गिफ्ट्स दिए हैं। Trust in your ability, believe in yourself, and everybody is unique. So Hmm. just don't try and be something else. I've seen people who have become successful trying to be someone else also, but it's just a gimmick, you know. Yeah. Yeah. Most Yeah. people who are ultra successful are honest to the core, at least in the Hmm. sense that they are honestly portraying themselves. वो वही है जो अंदर दिख Yes. रहा है जो बाहर है. So that Yeah. is the Yeah. biggest learning that I've got. Right. Yeah. Amazing advice. Right off the bat, Sushant sir, वर्ल्ड कप का ट्रॉमा खत्म हुआ कि अभी मूव ऑन होना बाकी है? वर्ल्ड कप ट्रॉमा खत्म नहीं हो सकता बिकॉज होपलेस सिचुएशन है. होपलेस सिचुएशन इसलिए बिकॉज ये जब तक लोग अब जब तक आपका सिस्टम सॉर्ट नहीं होगा आप कुछ नहीं जीत सकते. सी पीपल कैन टेल मी दैट ओ हम इसलिए हार गए क्योंकि हम चोक कर गए, हम इसलिए हार गए क्योंकि हम बड़ा मोमेंट में नहीं कर सकते. ऑल दिस इज बलोनी, यू नो. आई डोंट बाय दैट बिकॉज वी आर नॉट साउथ अफ्रीका. You know, India has won a lot of tournaments, and Yeah. we were the first nation who showed the Hmm. world that the West Indies can be beaten, right? And we showed not only Asians, but we also showed the Goras कि ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड भी ऐसे हराते हैं, ऐसे जीतते हैं क्रिकेट के अंदर. 83 में जो हमने किया, उसके बाद आपने जाके 2007 किया, 2011 किया, 2013 चैंपियंस ट्रॉफी Hmm. किया. So I don't believe in this nonsense कि we choke. Yes, we do choke, but the reason behind it is because we are not selecting the right set of players. Right now, it's the toughest job in the world to get selected into these 11 players. And trust me, the selection process, the kind of opportunities that are given to some people over the others Hmm. is just, you know, it's criminal what they are doing. So I think ये सबसे बड़ा रीजन है. अगर हमारी फेयर सिलेक्शन हो, जो हार्दिक पांड्या ने सही बोला था बिल्कुल, कि अगर इंडिया Hmm. 3 टीम बनाए ना इस टाइम पे जितना Hmm. डेप्थ इंडियन क्रिकेट में है, एक भी टीम ना हारे, वो तीनों टीम हरा दे, वर्ल्ड Hmm. चैंपियन बन जाए. बट जो टीम हम भेज रहे हैं वो कभी नहीं जीत सकती हाँ. बिकॉज वही लोगों को दोबारा दोबारा दोबारा. सो आई होप कि दिस चेंजेस. आई होप दे गेट सीरियस अबाउट वर्ल्ड कप्स. But I've Hmm. said it lots of times on Sports Yaari also कि I don't see World Cups being so important right now. 7-8 साल के बाद तो NBA की तरह सिर्फ IPL ही होगा और कुछ होगा नहीं. सिर्फ Yes. IPL चलेगा, 7-8 Hmm. महीने IPL चलेगा, 20-25 टीम होंगी, and that's where the business is headed. Right. If you had to pick कोई एक दो मोमेंट आपको याद है वर्ल्ड कप में that was a turning point for India? Quick one. If you haven't subscribed to this channel yet, please do so. Your support is the only reason that I've been able to have all these incredible guests on my podcast for trying to bring more value to you. So please do me a favor, hit that subscribe button, like the videos, leave me a comment, hit the bell icon, save the podcast, share it with your friends, whichever platform that you're consuming this on. And yeah, that's it. Back to the podcast. Turning point of India as in losing Like wise or on the losing winning side, wise? yes. लूजिंग साइड सबसे बड़े मोमेंट्स फाइनल के थे. एक तो रोहित शर्मा का विकेट. I Hmm. think that was very, very big moment because he just took the game away from the Australians and he just threw his wicket away. It was the last over before the power play. सारे रन आ Hmm. चुके थे, 80 रन बन चुके थे. We had 80 runs already. And शुभमन तो पहले आउट हो गया था. विराट कोहली ने उससे पहले विराट because people say strike rate strike. विराट कोहली उससे पहले Hmm. वाले ओवर में 3 चौके मार चुका था. He did 3 boundaries. और Yes. उसके बाद रोहित ने उस ओवर में छक्का चौका मार दिया था मैक्सवेल को. तो अगर वो अननेसेसरी शॉट ना खेलते, वो अब वो पुल ऑफ कर देते, छक्का हो जाता तो अलग बात है. Hmm. बट उससे पहले वाले गेम में भी उन्होंने यही करा था कि 40 पे आउट हो गए. एग्जैक्टली आई थिंक सेम स्कोर था 47-48 न्यूजीलैंड वाले सेमीफाइनल में भी, एंड एग्जैक्टली इट वाज द सेम इन द फाइनल आल्सो. सो ही शुड हैव डन बेटर दैट वे. दैट विकेट जस्ट चेंज्ड एंड ऑब्वियसली द रियल नेल इन द कॉफिन वाज विराट्स विकेट बिकॉज उसके बाद मैच खत्म हो चुका था.
पैट Hmm. कमिंस ने भी ये बोला, उससे पूछा गया भाई तुम्हारी मेमोरी 70 साल के बाद बताओ, उसने बोला विराट कोहली की विकेट, बिकॉज एवरीबडी न्यू विराट आउट हुआ, मैच खत्म था। Hmm. केएल राहुल से मुझे कोई एक्सपेक्टेशन थी नहीं, और उन्होंने बिल्कुल I was coming to that. जो उनसे एक्सपेक्टेड था उन्होंने बिल्कुल वैसे ही खेला। आई न्यू ही इज गोना डू Hmm. दैट। आई वाज होपिंग अगेंस्ट होप कि एंड में जाके शायद ये चल जाए, शायद एक्सेलरेट करे, बिकॉज ही हैज ऑल Hmm. द टैलेंट इन द वर्ल्ड, but he just doesn't have that killer gene. He doesn't have that killer instinct, which you need to win tournaments, right? And we've Yeah. seen that time and again from him. Surya Kumar Yadav, we all knew. We were hoping against hope that he'll do something in ODIs. His record speaks that, he shouldn't even have been there. We've made him play the World Cup final. Ravindra Jadeja also, fear breeds into people. Hmm. Fear is contagious. So when you see a KL Rahul playing that way, that fear, just multiplies. So Yeah. Ravindra Jadeja was awful, and KL Rahul was awful, and Surya Kumar Yadav was awful. उनसे अच्छा तो यार आके जो बाद में मेरे ख्याल बुमराह और कुलदीप यादव और इन सब ने Hmm. उनसे बेटर कर दिया. So Huh. I mean, it was just a sad day, and we lost the game actually when Virat was out. Yeah. We lost the game. Yeah. केएल राहुल was super slow in batting. And मुझे एक दो मोमेंट्स भी याद है उसने मिसफील्ड भी की है. Like he didn't even put in the efforts to stop the ball. उससे हुआ नहीं ना. He just chokes under pressure. He just takes a lot of pressure. He does overthinking, and then he's an introvert. So he just Hmm. collapses. He just collapses. Okay. And a lot of KL Rahul fans think I hate him. Yeah, I love him. I think he's a superb cricketer. He's a superb batter. I think he is even more talented than Virat and Rohit. But क्या करना है ऐसे टैलेंट का? जब पॉइंट पे जब जरूरत है तब आप परफॉर्म ना करो तो कोई जरूरत नहीं है ऐसी टैलेंट की, फिर फायदा नहीं है. अभी अपने स्पोर्ट्स यारी पे फोकस करते हैं सर. You hit a Hmm. milestone recently, 5 million views a day. Congratulations. आपकी Thank you. सबसे Thank you. story, like you hit 100K subscribers within 2 weeks. Like how did that feel like from the starting days? Yeah, it happened so quickly that there was very less time to register, because वो शुरू किया, ऑन एयर हुए, फिर वो मतलब सिर्फ काम में लग गए. उसके बाद आईपीएल आ गया, कोविड हो गया, लॉकडाउन हो गया, वो सुपर लॉकडाउन, दैट सुपर Hmm. लॉकडाउन टाइम व्हेन एवरीथिंग वाज शट, यू weren't even supposed to get out of your house. So everybody stayed there, everybody slept there in the studio. I used to be the only person who had a pass, so I used to commute from my house to the office. सारे एसेंशियल्स लेके जाता था, रात को सारे मूवी देखते थे शो के बाद, फिर मैं सुबह वापस आता था, फिर जाता था. Hmm. So it happened so incredibly fast that there was no time to register it. Yes, we acknowledged that we'd got 100K subscribers in 2 weeks, but being a first time entrepreneur उस time में, and making the shift from the service industry to being employed by India Today and CNN Hmm. and earlier, to suddenly being an entrepreneur now, my whole focus was to get the money in. My Hmm. whole focus was कि भाई चलो शुरू तो कर लिया है. Now we made a huge investment. Now where is that Yeah. money going to come from? And the IPL was coming up next. So 100K Yeah. subscribers might sound very nice in 2 weeks, Yeah. but how much money is going to make you? How Yeah. much money are you going to get out of it? Because you have no proven record of getting Yeah. those views, right? Yeah. So you're just pitching to companies saying, no, see, we have the potential. You see our growth, and then after this thing, we are promising we are going to hit this number. Like you give them a ballpark number of views, which is all in Hmm. the air. Yes. Just like Hmm. any if you say any valuation of any startup, it is Hmm. always in the air, right? Yeah. I'm talking about like monetarily, it is all up in the Yeah. air. जो भी तुम बना Yes. यहाँ पे views wise also it was all in the air, right? Yes. Because हम बोल रहे थे भाई हमारे proven track record है, हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, but दिखाने को कुछ नहीं था. So that Hmm. was the main challenge, but I mean luckily अभी भी चल रहा है तो good है. Did you get an investor from day one? Because like a lot of people would Yeah. be having that like कुछ sports में कुछ कर सकते हैं, but they don't know the like right approach to this. Yeah, so I had an investor on board from day one, and they invested the money. We had a partnership going, and it was very good. Mm-hmm. So it was all back, but now recently we parted ways. So now I'm running Sports Yaari all by myself. So and Mm-hmm. very amicable parting of ways, and so all of the legal stuff is out of the way, and we've sort of. To make it simpler, we've just bought our own Hmm. product, 100% of the shares. So Hmm. जो भी करना था वो basically property सारी की सारी हमारे पास आ गया स्पोर्ट्स यारी, तो अब कंटिन्यू कर रहे हैं. Nice. And how many people were Yeah. there on your team from the inception days? Inception days, I think we started off with 15 people minimum. I'm Mm-hmm. not sure of the exact number,
We started off with 15, but I think maximum number after 2 years, we were up to 40 people. 40 people Wow. in that small office in Okhla. Yeah. Right. And what was So the we started strategy off. like? The strategy was just to work, yeah, just to get the views and that to just to get the sponsors. Because in our business, see, if people are watching you, right? So you can get advertisers on board, right? So your Hmm. content, if people are watching your content, then you get advertisers on board. YouTube also pays you very minimal, but they also pay you. Hmm. So that is the business model. So वही करना था और उसके साथ में you get try and get new talent in, try and break new formats and keep engaging the audience. That is what we did. And did you have any sort of targets कि एक दिन में इतने videos upload करने ही हैं? So we kept a minimum 10 to 15 videos a day. इतना तो हम पहले ही करते थे. And we were a very very experienced team. Hmm. I was leading a very very experienced team who had a lot of experience doing this sort of stuff. So they were already in a well-oiled machine, right? Hmm. We just rebranded and we restarted a fresh product and we took it off from there. Right. And like since you said like you had an experienced team, but like you had a lot of like experiences from working abroad, like working with all these industry professionals. Did you guide them that this is one element that should be there in all of our content pieces? I think there were a lot of do's and don'ts. I can't particularly say what. I think what mattered to me was hygiene on air. Mm-hmm. Um, we really thought how we would dress and to everyone. So I would make sure that to buy all the talent clothes myself, and we would go out and buy them clothes because this is a startup, right? So you have to Yeah. do all these little baby things are very important that people don't know. Yeah. Yeah. Then Yeah. even to create the set, like I quit the job, we all quit the job, and I got the set made in a month, and it was like a really crazy ride because I saw that entire hall, empty hall, get Hmm. transformed into this beautiful Sports Yaari set. So our Hmm. set was actually better than the Sports Tuck set when we launched. So Mm-hmm. one thing I was always sure of that production value kam nahi honi chahiye. That is what I Hmm. always told. So I did things that maybe I spent a little more, but my production quality, because I knew that Hmm. first impression is the last impression. So when we came Yeah. out with the production quality and with our graphics, our PCR Hmm. production control team and everything, camera people, um, we didn't cut costs there. We were always getting the best cameras, the best edit machines, the best studio. Everything was Hmm. top notch. So we actually made a better studio than what a thousand crore Hmm. company India today would have Yeah. Yeah. had Yeah. made. So where we were coming from, we that's why we made such a big noise. Hmm. 2 weeks Yeah. mein Yeah. Yeah. 100K subscribers are good, but that's why we made such a big noise because the product itself, we had the Hmm. talent, we had the production quality, and it was looking great. So that is Yeah. what added to And our did you product. also Yeah. focus, like since you said like production value कम नहीं होनी चाहिए, but did you also focus on like the platform elements like YouTube पे ये title like something's going viral, you use that, put your culture thing in it, like sports culture, use that title, something like that. Did you use all those strategies as well? Of course, see, and as I told you, it was a well-oiled machine that we had. We had very experienced producers. So all those senior producers used to make sure that all the trending stories were done. And we didn't Hmm. miss one story. We also used to break a lot of stories first. Our boys literally lived in that studio, right? Including Hmm. me. So we were always available. We were always doing, even through COVID, we would always do the show. So we never dropped the show. So our thing was we were hammering our competition because we were always there upbeat, right? Our Hmm. energy never went down. And we were always breaking the news first, right? Whether it's interviews or news or views or whatever it was, Sports Yaari was always Hmm. on. We were Yeah. always live. Yeah. So it was like a channel which actually it was Yari, people used to just come Yeah. there and hang out like it's they are watching us speak in their living rooms. Like I can say that like whenever there is a cricket game going on, I Google it. You have there is at least one video of Sports Yaari in the top one or two, three ranks. Like I can see that. Like now it makes sense. Like कोई भी hit piece है, like you capitalize on it. But there's also something called
कि रिटेंशन हमें होता है, like what is Hmm. your retention strategy for YouTube? अगर टाइटल हम So यूज कर रहे हैं हिट पीस का, something that's viral, you use that, but retention is like one of the most important elements of use YouTube. yeah, so Akash, I'll tell you what. See, retention, obviously, it's a big deal. We have been very blessed that we've had a very, very loyal audience with Yari. So we didn't have a problem retaining them. They were always with us. The real challenge is to add the new audience on, right? So you have to make a product which you have to define and discover as you go along, right? And it is Hmm. such an unforgiving schedule that cricket is always on, right? तो वो तो तुम Yeah. जो कर रहे हो वो तुम्हें करना ही है, बीच में तुम्हें रीडिस्कवर भी करना है, तुम्हें नया प्रोडक्ट भी लॉन्च करना है. That was the main challenge for us. But I think we've accumulated a very healthy and a very solid fan base. Like अगर मैं आपको example दूँ, the day that India lost the final, we had 32,000 people watching live, and Hmm. we did a 5 hour live till I think about 2 or 3 in the morning, 3:30 in the morning. It was a 5 hour live, and the average concurrent viewers on that live are 16,000 people. So can you Wow. imagine that for 5 hours, Yeah. 16,000 people for 5 hours Hmm. average were watching us live throughout our transmission. And अगर हमने बंद नहीं किया होता, अगर हम सुबह 6, 7, 9 बजे तक भी करते सुबह, still you would have had an average above 10,000 Yeah. people. So that is what our real जिसको बोलते हैं हिंदी में कि हमारी असली कमाई ये है, that we've Hmm. actually uh, got this yari going with our fans. That sounds बहुत amazing numbers है. What did you learn from your launch and that you wouldn't do it again? Yeah, it has been such a magical journey that I know it's a very cliched answer, but ये तो नहीं है कि मैं कुछ उस तरीके से नहीं करता, because there have been a Hmm. lot of learnings. I would say that again, it's cliched, but that is the honest truth. कि there have Hmm. been a lot of learnings. मैं ये बता सकता हूँ कि क्या नहीं करना चाहिए first time Hmm. entrepreneurs को, especially Yeah. media entrepreneurs को. So what you cannot do is to allow anybody, you know, uh, certain things hygiene wise that you have to have in place is your paperwork. You need to have NDAs because you've always been in a small group when you start. So startups Hmm. doesn't start with thousands of people like your big group like India Today or CNN. It has to start with 15, 20 people. It has to start with as close knit a group as possible. Hmm. So first things first, keep the circle very, very small. Hmm. Work with people जिनकी जितनी जरूरत है. Don't Hmm. try and over accumulate. बहुत ज्यादा लोगों को लाने की जरूरत नहीं है. Yeah. Secondly, keep your paperwork very, very solid. Paperwork in the sense that even with your employees, you should Hmm. have NDAs in place. Even with your partners, you should have all the paperwork crystal clear from day one. Because Hmm. हमने स्टार्ट किया बहुत जल्दी जल्दीबाजी में, राइट? सो उससे क्या होता है ना, अगर पेपर वर्क डे वन से क्लियर हो, एक्सपेक्टेशंस क्लियर वन से सेट हो, राइट? Hmm. सो यू नो दैट nobody can then go and damage the company as such, neither your Hmm. employees nor your partners. So Yeah. that is very, very essential for any startup. Secondly, when you do taste success, and God bless everybody जो भी startup करता है, I know it's a very challenging journey. अगर आपको success Hmm. मिलती है, and by success layman terms, when you get the money, सीधी बात यही है, जब आप पैसा बनाते हो ना, जब पैसा आपके पास आता है, Hmm. प्लीज डू नॉट स्पेंड इट एंड प्लीज डू नॉट हायर अननेसेसरली. होता क्या है कि Hmm. आपके पास पैसा आए, योर फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर, देन व्हाट यू डू इज कि अच्छा भाई टीम बढ़ा लो या अपने खर्चे और Hmm. बढ़ा लो, कभी भी मत करो. Yeah. What you should do when you actually taste success and get money is cut down on costs. Hmm. Cut it down. Save more. Invest more. And invest in the literal term invest. भाई जाके देखो कि हम कोई ऑफिस स्पेस खरीद लो, कुछ और खरीद, ऐसी चीज करो जिससे तुम्हें और पैसा मिले. इन्वेस्ट इट समवेयर एल्स. डू नॉट अननेसेसरली expand the team. Do not unnecessarily Hmm. put pressure on your payroll. Do not unnecessarily get stuff that you do not require. ये कभी नहीं करना चाहिए. Hmm. And the most important thing, and I don't think anybody talks about this as an entrepreneur, is Hmm. to not make the mistake of assuming that people are like you. Hmm. कभी भी ये मिस्टेक जिंदगी में नहीं करनी चाहिए.
स्पेशली Yeah. जब आप एंटरप्रेन्योर बनो. क्या होता है ना, मेरी पर्सनालिटी डिफरेंट है, आकाश आपकी पर्सनालिटी डिफरेंट है, किसी और की पर्सनालिटी डिफरेंट है, राइट? अब मैं सोचूंगा, इफ आई एम अ क्लीन हार्टेड पर्सन, नाउ आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, राइट, बिकॉज आई कांट गिव माई सेल्फ दैट सर्टिफिकेट, और यू ऑल्सो. कोई अगर क्लीन हार्टेड पर्सन है, कभी भी ये मिस्टेक मत करना कि किसी जिससे तुम डील कर रहे हो, स्पेशली बिजनेस में, कि तुम अज्यूम कर लो कि वो भी वैसे ही रिएक्ट करेगा या वो भी सेम बंदा है. बिल्कुल भी नहीं. इवन इफ यू आर Yeah. अ फ्रॉड इन द कन्वेंशनल सेंस, राइट, Yeah. even if you are a sort of a person who can't trust people, right? Hmm. And you get things done by the Teda way. Do not make the mistake of assuming that the other person is also like that. You might actually get a person who's very, very genuine, right? Yeah. And if you're a genuine person, do not make the assumption that everybody who you're dealing with is also just genuine like you, right? Never ever make that mistake. कभी नहीं करनी चाहिए. Hmm. जो भी करना है, इसीलिए मैंने बोला, जो भी करना है आपको पेपर वर्क के साथ करो. जो भी करना है Hmm. आपको एक्सपेक्टेशन सेट करो, एंड इट शुड बी वेरी वेरी प्रैक्टिकल इन बिजनेस, Yes. राइट? हमेशा होना चाहिए. तो ये मेरी थोड़ी सी लर्निंग्स है यार, बट अल्टीमेटली अगर मैं बोलूँ ना आपको, तो बहुत टच वुड, बहुत बहुत गॉड हैज बीन रियली रियली काइंड, Yeah. एंड इट्स बीन अ फिनोमिनल राइड फॉर स्पोर्ट्स यारी. फिनोमिनल. Yeah. Yeah. Sounds great. There's also a whole different group of people who don't have funding, who don't have a lot of money, who don't have any investors backing them. Like उनको या passion है cricket का या कोई भी sports का, football का, and they want to become a sports commentator, like a sports blogger, vlogger, anything in that sports category. What do you think? What should be their move? Like, do you have any advice for them? आई थिंक द फ्यूचर इज वेरी 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 ब्राइट, right? But if you want to do football, if you want to do any kind of sport, I think carve a niche, be practical. At the end of the day, blogging, vlogging, whatever you want to do, it needs to pay you. Somewhere down the line, it needs to pay you. आप प्लान तो नहीं बना पाओगे कब तक पैसा आ पाएगा, वो तो प्रैक्टिकली पॉसिबल. हाँ, कोई इतना स्मार्ट हो, मैं तो नहीं हूँ इतना स्मार्ट कि मैं प्लान बना पाऊँ कि भाई अगर मैं फुटबॉल ब्लॉगिंग आज से शुरू करूँ तो मेरे पास पैसा कब तक आना शुरू हो जाएगा, कोई मेरे को बैक कर दे, कुछ नहीं पता. Hmm. बिकॉज इट कैन हैपन ओवरनाइट, इट माइट नॉट हैपन फॉर द नेक्स्ट 10 years फॉर अ Yeah. पर्टिकुलर इंडिविजुअल. सो again, you have to be very, very honest with yourself. Firstly, do it. Obviously, you have to earn. So Hmm. keep it as a side hustle to begin with, is my advice. Don't Yeah. jump into it full thing. Obviously, many people think नहीं यार करना है, पूरा करना है, वो भी आप कर सकते हो, ट्राई कर लो. Hmm. बट एक कट ऑफ पीरियड रख लो कि नहीं चल रहा तो कब डिसाइड करोगे पैसा कब कमाना है, राइट? तो you will get to know within the first 6 months, 7 months, 8 months, maximum year, okay, if you are making engaging content. See, people have to watch you. If you are in this Hmm. business, people have to Yes. watch you. Yes. That is the bottom line. कोई उसके ऊपर फिलॉसफी, कोई साइकोलॉजी, कोई उसके ऊपर ज्यादा ज्ञान बांटने की जरूरत नहीं है. ये सिंपल लाइन है कि भाई लोग Hmm. देख रहे हैं तो आपका बिजनेस चलेगा, आप सक्सेसफुल Hmm. होगे. लोग नहीं देख रहे तो कुछ और करो, सीधी बात है. Hmm. और ये मतलब नहीं है कि उसके लिए कोई भी हथकंडे अपनाओ. अब आजकल तो लोग हर टाइप का कंटेंट बना रहे हैं वैसे, लेकिन Hmm. मैं ये बोलूंगा कि if you want to do football, if you want to do kabaddi, if you want to do badminton, if you want to do tennis, if you want to do anything, the future is incredibly bright, but you have to be smart and you have to have the gift of the gab that people need to watch you, people want to watch you, right? I'll give you an example. नाम मुझे याद नहीं आ रहा. This guy, Ariel Havani. So you must check out Mhm. this guy. Whoever wants to be a vlogger in that sense, now I'll give you this guy's name. Ariel Havani was the first guy in the US who started his own blogs and mini interviews and everything on mixed martial art. Mhm. कोई नहीं पूछता था उसको, बेचारा अकेला कैमरा लेके चला जाता था. जब कोई नहीं पूछ रहा मिक्स मार्शल आर्ट्स को, आज से 10 साल पहले कोई नहीं पूछता था. Mm. वो चला Mm. जाता था, कभी इंटरव्यू कर रहा है शक लिडेल का, दीज आर ऑल ओल्ड स्कूल, केन शेमरॉक का, ओल्ड Yeah. स्कूल. मेरे को एग्जैक्टली नहीं याद किस किसका करा, बट ही स्टार्टेड डूइंग दैट शुरू में. नाउ ही इज बिकम द बिगेस्ट, वन ऑफ द बिगेस्ट एमएमए ब्रॉडकास्टर. उसको मेन उसने भी ले लिया, आपकी यूएफसी ने भी लिया उसको काफी चीजें करने के लिए. वो Mhm. ब्रॉडकास्ट नेटवर्क्स पे भी आने लग गया, उसका खुद का नेटवर्क बहुत बड़ा हो गया, खुद का यूट्यूब चैनल बहुत बड़ा हो गया. बट ही केम अप Mm. द हार्ड वे. ही सॉ पोटेंशियल, ही वाज वेरी वेरी पैशनेट अबाउट इट. Yeah. So A, you need to have passion for that sport, whatever you want to do, and secondly, you need to be practical. आपको पता Mm. चल जाएगा एक साल के अंदर कि आप कितने पानी में हो, राइट? Mm. वो मेहनत पूरी करनी पड़ेगी, उसका रिजल्ट लेकिन आपको एकदम से ही मिलेगा. Mm.
थोड़े टाइम के बाद, but you have to stick to it if you are really passionate about it. Yeah. But भाई पैसा बड़ा important है तो वो मत भूलना, Yeah. पैसा कमाना बड़ा important है, so you need to think about that too. Yeah. What about esports? There was a report of KPMG. They said that esports industry will grow up to $1.6 billion till 2025. Like, आपको क्या लगता है, like, esports in India? It's amazing. It's already we wanted to venture into it. We are still planning to. I think 2024 we'll get into it, covering it. There are a lot of tournaments. We've done a case study on it. It's incredible. It's just esports in India. Sky is the limit for it. Even sky is not the limit. They'll cross that limit also, because of just the interest in it. And I mean, I don't know if you know, but India Today में जब मैं था, they were doing this Free Fire league. वो कराते थे वहां पे, पूरी लीग होती थी, टूर्नामेंट होता था, बच्चे आते थे, खेलते थे, एंड hundreds of crores worth business यार, एक एक दिन का hundreds of crores worth tournaments. So sky is the limit for esports in India, and I don't think we've scratched even the surface of it. So we definitely want to get a piece of it. So I think we are planning 2024 to get into it, sometime later half of 2024, definitely. And I think very, very, very immensely bright future for esports. I look forward to that. अभी mindset की बात करते हैं सुशांत भाई, like cricket is a religion in India. Like, that's how powerful it is. Whenever you make a piece of video, piece of content, anything on your socials, like, you have to live up to your audience's expectation. वो कैसे maintain करते हैं आप, like, in every content, in every video, every day? Yeah. See, my whole thing is, and my, how my personality is, we never try to meet anybody's expectations. We just speak from the heart. And whether your expectations are met or not, but you will relate to it. ज़्यादातर लोग हमसे relate करते हैं. Whether we win or we lose, we are very passionate, so we are speaking their language. That is essentially the sports Yaari. That's why it's called Yaari, Yeah. So that's our flavor. So we speak your language. We are very colloquial. We are very passionate again. We are very emotional, because as you said, it's a religion, so it drives a lot of emotions. So we never try to hide that. We never try to camouflage that. And that is our biggest strength, I think, the way that we conduct ourselves. As I told you, the biggest learning for me is always be yourself. So we are not trying to pretend to be somebody else. A lot of hardcore big network influencers or anchors do that, but we don't. So जैसे आपने पूछा, सबसे बड़ी बात ये है कि हम expectations तो नहीं meet करते. Yes, we ruffle a lot of feathers with our fans also, our viewers also. We get a lot of threats also. We get a lot of love also. We get a lot of, a lot of abuses also. But ज़्यादातर प्यार ही मिलता है. 99% तो प्यार ही मिलता है. 1% abuses सह लेते हैं. Threats from our neighbors? नहीं, neighbors तो बहुत प्यारे हैं. वो तो बहुत प्यारे हैं. वो तो बेचारे खुद को ही गाली देते हैं. वो तो बहुत प्यारे हैं. इधर के हमारे वाले. Okay. Sushant bhai, like you said, आपकी community है, like they watch because they relate to their emotions, they relate their feelings with you guys. When did you feel like you've made a massive impact in your community? Like, do you have any instance, a story that you can share? Massive impact in the community, as in Like, Sports you've Yaari built family. Sports Yaari community so big that, like you said, like 5 घंटे बैठ के देखते हैं. That was one of those stories. Do you have any stories when the first time that you felt like, okay, now we are on the right track, we've made it? यार ऐसा तो नहीं है that we made it. It's still a long way to go. अभी तो start ही कर रहे हैं basically. You can see that किसी भी startup में 2-2.5 साल तो कुछ भी नहीं है यार. You hardly break even in 2-3 years. I mean, if you break even in 2-3 years, you should be thanking your stars. तो that way. But मतलब ऐसा तो नहीं है कि हम कोई बहुत बड़ा हमने कुछ achievement मार दिया उसमें. लेकिन yes, it just hits you different when, like, I recently went to Nepal, and I was so in Nepal we went to the Pashupatinath temple, and then with the cable car we were staying at this hilltop hotel. वो एक secluded से hill के अंदर 2-3 cable car change करके बहुत ऊपर जाके hilltop पे एक hotel है. तो वहां पे I went, and वहां मैं buffet लेने जा रहा था, तो the guy who was behind the counter, he said, Sushant bhai. So I said कि yes. तो बोलता भाई मैं स्पोर्ट्स यारी देखता हूँ और मैं आपको बहुत फॉलो करता हूँ. So imagine in Nepal, where I am in this very, very remote location, where I am on the hilltop in a hotel, जहाँ पे कि मतलब
ज्यादातर 20-25 फैमिली से ज्यादा कोई नहीं होगा, कोई किसी को नहीं। वहां पे किसी ने अगर अप्रिशिएट किया आपका काम, या वो बोल रहा है मैं आपको जानता हूँ, नॉट ओनली इन इंडिया, इन नेपाल। So I think that is the biggest, I think, reward for us. तो वहां पे लगता है कि यार, जो मैंने आपको पहले बोला कि ये हमारी असली Hmm. कमाई है. That is when it hits you that yes, it matters to people. People relate to you. People like your work. Yeah, like अभी थोड़े दिन पहले एक there was this Pakistani girl who I used to do this Spaces show, Twitter Spaces and live with Hmm. YouTube. I'm not remembering her name. She started crying, यार. She started crying live on television, saying कि आप बाबर आजम को प्लीज कुछ मत बोला करो सुशांत भाई, मुझे नहीं अच्छा लगता, और आप प्लीज क्रिटिसाइज मत करा करो. सो देन आई सेड आई अपोलोजाइज. आई सेड अच्छा अच्छा, नहीं बोलूंगा, नहीं करूंगा. हालांकि फिर मैंने शरारत करके बोल दिया. लेकिन फिर those are the kind of things that you actually think that Hmm. uh, it's not fake. Our relationship Hmm. with our fans is not fake, at least not from my side, and I 100% not from their side either. We really care about each other, and we can really relate to each other. Yes, sir. Or we just work for our fans. Yeah. सच्ची बात तो यही है कि we work for this family, and not fans, but Yari family है. Viewers are really hardcore. Yeah, yeah. And when you speak of up Twitter Spaces करते हैं, is it like regular basis or you guys do it randomly? I did it through the World Cup. So I was very, it was as I said, it was a very unforgiving schedule because पहले हुआ आपका एशिया कप, बीच में भी कुछ हुआ, उससे पहले भी कुछ था. पहले आईपीएल हुआ, फिर कमिंग टू द एशिया कप, फिर एशिया कप के इमीडिएटली बाद वर्ल्ड कप. अब थोड़ी टूर्स होंगे, फिर आईपीएल, फिर से वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप. सो इट्स एन अनफॉरगिविंग स्केड्यूल. तो मैंने वर्ल्ड कप के थ्रू क्वाइट डेली करा. अभी आई एम लिटिल बिट ऑफ अ ब्रेक, एज इन शोज तो रोज कर रहे हैं, लेकिन वो स्पेसेस भी करना 2-2 3-3 बजे तक, रात को 1-1 1:30 बजे तक, वो अभी नहीं कर रहा हूँ. बिकॉज अभी जब टाइम होगा, मतलब अगेन व्हेन इट्स अ बिग टूर्नामेंट, देन वील डू इट अगेन. Yeah, yeah. For viewers like Sushant is very hardworking. It's 11:30 here right now, and we're doing it right now. So when he says unforgiving schedule, he means it. बोलो 11:30 इन द नाइट, हाँ, नॉट Yeah, इन द डे, क्योंकि 11:30 in लोग the night. सारा करो. Right. So, okay, like let's segue for a minute. Like, सर कोई start कर रहा होता है, like an individual blogging or YouTube channel. They worry about when they're trying to chase their passion. They worry about like if it will make money. Like, what if it fails? Like, even if I get some subscribers, like 10K, 20K, how will I monetize it? ये सब questions होते हैं. What advice would you give to them, and is it worth fighting for that goal? 100% worth fighting for that goal. 101%. You have to firstly analyze yourself properly. Do not be dishonest. आप अपने आप से बात करो, बोलो कि यार मैं क्या खुद को सुनना चाहता हूँ, या मैं कोई ऐसी चीज करता हूँ जो लोग सुनते हैं मेरे आसपास. कैन आई होल्ड अ क्राउड? फर्स्टली एनालाइज योरसेल्फ, assess yourself properly, and you will not go wrong. If you lie to yourself कि यार मैं ये कर लूंगा और कोई बात आपकी सुनता नहीं, वैसे ही रियल लाइफ में तो ऑडियंस को भी सुननी चाहिए. बट हाँ, ट्राई करो. And I am telling you, you have such a bright future. But my main advice to people who are now YouTubers or Instagram पे हैं लोग, या Twitter पे हैं कुछ influencers, अब तो Twitter भी उस तरीके से कर रहा है. The only advice is कि don't depend on these platforms in the longer run. Hmm. अपना प्लेटफॉर्म बनाओ, अपनी वेबसाइट बनाओ, अपना कुछ करो, in the longer run. Yes, this is very very good to start with. तो कंटेंट मत छोड़ो, कंटेंट क्रिएट करते रहो, बिकॉज कभी नहीं पता एक वीडियो हिट होती है और उसकी वजह से तुम्हारी Hmm. सारी वीडियोस लाइमलाइट में आ जाती हैं, कोलैबोरेशंस होने शुरू हो जाते हैं. मेहनत तो करनी पड़ती है, यू हैव टू बी पेशेंट. किस्मत पे भी बहुत Yeah. डिपेंड करता है यार. हो Yeah. सकता है तुम्हारी पहली वीडियो हिट हो जाए, हो सकता है तुम्हारी जाके 100th वीडियो हिट हो, राइट. Hmm. बट एक बात फॉर श्योर है कि अगर मेहनत करते रहोगे ना, इफ यू पुट इन द वर्क, यू विल गेट द रिजल्ट्स. रेस्ट एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर एबिलिटी एंड हाउ यू हैव असेस्ड योरसेल्फ. अच्छे हो तो अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, नहीं हो तो मैं जैसे पहले बोला, कुछ और काम करो. हर कोई Hmm. इन्फ्लुएंसर नहीं बन सकता. Yeah. कंपटीशन इसलिए Oh, बहुत है. or what about people who have reached 20, 30, 40, 50K और वो brand deals लेने में struggle कर रहे हैं? Like, how would you advise them? Like, they should acquire or get a brand deal, or is it like they should wait for somebody to reach out to them? अभी मैं 30-40 के वाले को मैं यही बोलता हूँ हमेशा कि अभी मत करो Hmm. ब्रांड डील.
बिल्कुल मत करो, बिकॉज आपको शुरू शुरू में लगता है ब्रांडी ब्रांडी, ऑब्वियसली लोग बोलेंगे तुमने खुद ने कर लिया और हमें बता रहे हो, हमने तो 100K पे कर लिया था। तो ऑफ कोर्स इजियर सेड देन डन। जितना टाइम लगा सकते हो कंटेंट पे लगाओ, अगर अफोर्ड कर सकते हो तो जितना टाइम आप कंटेंट पे लगा सकते हो लगाओ, अपने कंटेंट को बेटर करो, रीच को बड़ी करो। 1-2 साल तक ये चीजें मत उठाओ, बिकॉज 30-40K पे आपको मिलेगा ही नहीं वो प्रोडक्ट जो आप डिजर्व करते हो, या वो पे आउट जो आप डिजर्व करते हो। 100K पे भी नहीं मिलेगा, वो मिलेगा ही आपको मिलियन के पार, जो आप असली में डिजर्व करते हो। और असली में देखो, ये करने के लिए 30-40K वाले भी बहुत हर चीज जगह पे आपको मिल जाएगा, ऐसे बहुत पे आउट्स मिल जाएंगे, छोटे मोटे पे आउट्स मिल जाएंगे, यू कैन डू इट। अगर करना ही है बिल्कुल, देन गो फॉर रिप्यूटेड ब्रांड्स, go for a Domino's, go for a Maruti, go for some brands which people know, so that later on when you actually become bigger, you have a portfolio that you have built. You can show when going to a brand that, listen, Maruti is advertised with us, Domino's has advertised with us, or something else, anyway Baiju's has advertised with us. तो वो अपनी हमेशा ब्रांड वैल्यू को ओवरऑल देखो कि आप कौन से ब्रांड के साथ एसोसिएट कर रहे हो, उसको कभी कम मत होने दो, राइट। और अच्छे ब्रांड्स पकड़ो, बड़े ब्रांड्स पकड़ो, और लॉन्ग टर्म का सोचो, कभी भी छोटे टर्म का मत सोचो, लॉन्ग टर्म का सोचो कि मैं 1 महीने की कम से कम किसी के साथ डील कर लूं, 6 महीने की कर लूं, 1 साल की कर लूं, राइट। सो थिंक लाइक दैट, थिंक लॉन्ग टर्म, डोंट थिंक कि मैं 2 दिन की डील कर लूं या कर लूं। अगेन आई एम सेइंग कि इजियर सेड देन डन, बिकॉज आपके वहां पे मॉनेटरीली आपकी क्या सिचुएशन है वो बड़ा डिसाइड करेगी इस चीज पे, Yes. क्या कर सकते नहीं कर सकते। Reach out कैसे करें सर उनको? Like how should they reach out to all these brands? Quick one. If you haven't subscribed to this channel yet, please do so. Your support is the only reason that I've been able to have all these incredible guests on my podcast for trying to bring more value to you. So please do me a favor, hit that subscribe button, like the videos, leave me a comment, hit the bell icon, save the podcast, share it with your friends, whichever platform that you're consuming this on. And yeah, that's it. Back to the podcast. रीच आउट यार, अब आज की डेट में बहुत मैनेजर्स होते हैं, बीच में बड़ी एजेंसीज होती हैं, उनके थ्रू जा सकते हो, एजेंसी से बात कर सकते हो। जो माइक्रो लेवल, अगर आप 30-40K वाले हो तो माइक्रो लेवल के आप इन्फ्लुएंसर हो, उसके बाद आप 100K क्रॉस करते हो तो मैक्रो लेवल हो जाते हो, उसके बाद और स्टेजेस आती है, तो आप उन एजेंसी से बात कर सकते हो। नहीं तो ऑब्वियसली आप डायरेक्टली भी कर सकते हो अप्रोच इन सारी कंपनीज को, उनकी सेल्स टीम्स को, मार्केटिंग टीम्स को, मार्केटिंग टीम्स को बेसिकली अप्रोच कर सकते हो कि सर आपका इतना बजट है, उसमें से इतना सा हमें दे दीजिए, ट्राई कर लीजिए, वी आर ग्रोइंग। एंड ऑब्वियसली यू हैव टू सेल योर सक्सेस स्टोरी कि हमने इतने मंथ्स में इतने व्यूज किए हैं, आगे वाले मंथ्स में इतने करेंगे, वी जस्ट नीड यू ऑन बोर्ड। इट हैज टू बी डन इन अ वेरी प्रोफेशनल मैनर, so for an entrepreneur and for an influencer also, you have to be the best salesperson first. आपको अपने आप को बेचना आना चाहिए, आपको ऑडियंस को भी अपने आप को बेचना है एंड आपको ब्रांड्स को भी अपने आप को बेचना है। तो वो दोनों स्किल आप में होना चाहिए, प्लस आपको अपना काम तो करना ही करना है, सारा का सारा जिस तरीके से करते हो। उस पे सेल्स भी क्या होता है सर पता है? Sometimes people get so far ahead, like they lie on their sales pitch. Is that bad? Oh, lying. See, you should first of all, as I told you, try and be as honest as possible. Never lie. Yes. Never lie in a sales pitch. Never overcommit. Never be short-sighted. Because उसको लेके आप भर जाओगे, आगे आपको फायदा नहीं होगा उस चीज का, उस टाइम तो आप फायदा करवा लोगे। मैंने सीधे बोला लॉन्ग टर्म सोचो, बड़े ब्रांड्स के साथ बड़ा काम करो, अच्छा काम करो, राइट। और किसी भी ब्रांड को आप, चलो एक एक चीज होती है कि लाइंग का तो मैं नहीं बोलता, लेकिन अगर आप थोड़ा सा ज्यादा कमिट भी करते हो ना, देन यू डिलीवर इट। If you are over committing, if let's say if I am saying, yes, sir, I got like 20 million views last month, I'm going to get 30 million views last month. Now, even if you know that you've never got that many views, right, and you've committed that, now I won't call that a lie. That is a promise that you can keep. So what you can do is, even if you don't get those views in a month, you can say that, okay, sir, we have gone. I've told you 30 million views. So we've done about 25 million views. We'll do 5 million views extra for you for no premier cost. And we'll do 5 extra for you just to make up for the 5 that we couldn't do. तो मैं आपको 10 million view आपको फ्री में देता हूँ, so that you work with us again. So इस तरीके की डील करोगे तो समझ में भी आती है। लेकिन अगर आप झूठ बोलने पे आ जाओ कि जी झूठा पोर्टफोलियो बना लिया, मेरे साथ झूठा कुछ भी बोल दिया, वो चीजें चलती नहीं है लॉन्ग टर्म में, वो चीजें नहीं चलती है। Right. And
since you said कि बड़ी brands को focus करो, but there would be people who also want to, like, they have lower number of following. They think in terms of steps कि अभी छोटी brands को approach करते हैं, then we'll reach out to higher brands. So what should be their approach in terms of reaching out to their level of brands? Again, you just have to hustle, yeah. See, again, ये बात पता है क्या फिर? If you are reaching out to the smaller brands, ना, then get a portfolio of, let's say, 10 brands. Hmm. आप फिर एक हाथी के पीछे मत जाओ. आप 10 स्मॉल ब्रांड्स पकड़ो. आप 1000 को अप्रोच करो और 10 लाइन अप करो या 20 लाइन अप Hmm. करो. आप फिर बोलो सर आपको जो पैसा देना दो, मेरा पूरा का पूरा जो एड स्पेस है ना वो भरा हुआ होना चाहिए. एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक. दीज आर Hmm. योर रिकरिंग मटेरियल. तो इसको इस तरीके से सोचो कि लेट्स से आपकी 100 ब्रांड्स हैं जिसको आप अप्रोच करते हो, ठीक है ना? Hmm. उन 100 ब्रांड्स की पेइंग कैपेसिटी क्या है? लेट्स से उनकी पेइंग कैपेसिटी है 1 लाख रुपए महीना, राइट? Hmm. आप उनको बोलो सर आप मुझे 1000 रुपए दो. उन 10 को दो, बोलो, ठीक? उसको 1000 रुपए पिंच नहीं करेगा. 1000 रुपए, 2000 रुपए, 3000 रुपए उसको पिंच नहीं करेगा. जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल, हाँ. उससे लो. उसको बोलो सर Hmm. आप मेरे को 2000 रुपए दे दो. कोई प्रॉब्लम नहीं, आप मुझे 1000 रुपए दे दो. बट फिर वैसे जो है ना, अगर आपने इसी मॉडल के साथ चलना है तो वैसे आप 10-20 लेके आओ, 50 लेके आओ. आप सोचो कि 1 हफ्ता उसके साथ, 2 हफ्ता, आप हर महीने उनका एक बजट बाँध दो कि सर इतने पैसे आप मुझे दो. Hmm. जो उसको बिल्कुल पिंच नहीं करेगा. एंड देन ये तो हो गए आपके रिकरिंग जो Hmm. मंथली है. ये तो आता रहेगा, आपका किचन चलता रहेगा, आपको इससे आता रहेगा. फिर आप Hmm. साइड बाय साइड 1-2 बड़ों को टारगेट करो. Who are going to give you that Hmm. lakh rupees per month? Who are going to give you that 50,000 rupees per month, right? ऐसे 4-5 को टारगेट करो जिनको आप 6 महीने में 1-2 बार लेके आ जाओ. कि यार ये मेरा सीजन आ रहा है, इसमें मेरे को 2, जैसे हमारे लिए वर्ल्ड कप आ रहा है. तो यार इसमें मुझे 2 कम से कम बड़े ब्रांड चाहिए. आप लोग मेरे साथ 2 महीने का टाई अप कर लो. आप अपना जो बजट है उसमें से इतना दे दो, उनको वो पिंच नहीं करेगा. सो यू हैव टू मेक अ पोर्टफोलियो वेयर यू हैव टू हैव these स्मॉल रिकरिंग ब्रांड्स. You can have 2 or 3 bigger brands, and you also need to have these medium brands. बीच में कभी लॉटरी Hmm. भी लगती रहती है ना. You need to approach. See, हाँ. again, when you're in the market now, you have to approach everyone. And remember that digital marketing right now is धीरे-धीरे booming. Still people are going for the conventional marketing method. तो Hmm. आपको हैमर करना ही पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा कि यार आप उधर पैसा वेस्ट कर रहे हो, इधर आओ, ये देखो, यहाँ पे क्या होता है. इतना सा देख के ट्राई कर लो. व्यूज तो दिख रहे हैं कम से कम. टीवी पे पास जाते हो, पेपर के पास जाते हो, क्या वो दिखा रहे हैं कितने व्यूज है? मैं तो दिखा रहा हूँ कितने व्यूज है आपके पास डिजिटल में. Hmm. दैट इज द मेन डिफरेंस. Yeah, that makes so much sense. I hope people found value from that. सुशांत, वर्ल्ड कप की बात की आपने. T20 वर्ल्ड कप आ रहा है. What do you think, like, would be like a wild card or a player that you want to see on the team and somebody whose position would be dicey? Somebody's position would be dicey. See, I definitely want to see Rinku Singh. I've always said I want to see Rinku Singh because I think he has it in him to not only do well for India but also actually win a tournament for India. I don't think he'll choke like KL Rahul in big moments. At least he'll give it his best. वो डरेगा नहीं, बड़े मोमेंट से घबराएगा नहीं. I want to see Yashasvi Jaiswal playing in the World Cup. I think he's a phenomenal opener, dynamite opener. I want to see Ravi Bishnoi again, very very impressive bowler, and somebody who's lion-hearted in his effort. Somebody whose position is dicey. See, people are going to hate me for this, but right now there's a whole campaign or I don't know agenda going on कि शायद विराट कोहली वर्ल्ड कप नहीं खेलेगा और रोहित शर्मा कैप्टन रहेगा. तो मैंने आज कुछ सैट्स भी शेयर करे थे कि आप देखोगे सैट्स तो आप बिल्कुल बोल ही नहीं पाओगे उसके बाद कि विराट रहेगा नहीं रहेगा. खैर मैं विराट पे नहीं जाता, बट आई थिंक मेरे को पहले रोहित की फिटनेस और फॉर्म देखना है. बाय द एंड ऑफ द आईपीएल, let's see where he is. Let's see what his fitness is. Let's see what his form is. Let's see how many runs he has scored. If Hmm. he actually delivers, then no doubt that he should be there. Otherwise, his IPL last to last season, and his World Cup and his Asia Cup T20, all of them have been a disaster. Hmm. मतलब ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप में मेरे ख्याल 20 की भी एवरेज नहीं थी. 106 की स्ट्राइक रेट, 106-7 की स्ट्राइक रेट थी. देन अगर आप इधर देख लो, आपके आईपीएल में भी देख लो, इट वाज अ डिजास्टर अगेन. 20 की एवरेज होगी, 136 टाइप की स्ट्राइक रेट होगी, कोई रन ही नहीं है. उससे पहले वाले Hmm. आईपीएल में भी देख लो, उससे पहले वाले T20 वर्ल्ड कप में देख लो. पहली बॉल पे आउट पाकिस्तान के अगेंस्ट, यहाँ पे भी देखो पाकिस्तान के अगेंस्ट, फिर जल्दी Hmm. आउट सेमीफाइनल में 29 पे 28. ही हैज बीन जस्ट ऑफुल
in T20s. So I want to see कि किस तरीके की फिटनेस रहेगी रोहित शर्मा की और किस तरीके की फॉर्म रहेगी आईपीएल के बाद. It's a long What tournament, so it's not a joke. What about Ishan Kishan? यार ईशान किशन हैज एनीवे बीन टेरेबल इन T20s. वो बहुत ही बुरा करा है उसने T20 में. उसने वनडे में बहुत अच्छा करा है, तो इन्होंने उसको वनडे नहीं खिलाया. वनडे में एक ऑप्शन बना के रखा, वनडे सूर्य कुमार यादव को खिला दिया और अब इसको T20 खिला रहे हैं. और आप ये देखो कि कितना अनफॉर्चुनेट है कि इस इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीरीज में जहां पे आपके 5 मैच थे, पहले के 3 मैच आपने ईशान किशन को खिलाए. पहले तीनों मैचेस में 200 प्लस स्कोर बना, मतलब कि विकेट्स फ्लैट थी. 200 बना भी है, 200 चेस भी हुआ है 2 बार. पहली गेम में ऑस्ट्रेलिया ने 209 बनाया, इंडिया ने चेस कर दिया 209. फिर दूसरी गेम में हमने 230 कुछ बनाया, ऑस्ट्रेलिया चेस नहीं कर पाया, लेकिन बहुत सारा स्कोर था 230 समथिंग. तीसरी गेम में हमने 223 बनाया, उन्होंने चेस कर दिया 223. मतलब पिचेस में कितना स्कोर था, वहां पे आपने ईशान किशन को ट्राई करा. फोर्थ गेम पे यू ऑल्सो स्ट्रगल्ड. सूर्या भी आउट, श्रेयस भी आउट, यशस्वी जायसवाल आउट, रिंकू ने बनाया रन, ऊपर से ऋतुराज गायकवाड़ वो भी रन बॉल टाइप खेल के गया. वहां पे तुमने जितेश शर्मा को खिला दिया, वो करा दिया कि ऐसी पिच के ऊपर अपना डेब्यू कर ले. थैंकफुली उसने वहां पे रन मार दिए, अदरवाइज तो तुमने उसका ग्रेव खुदवा दिया था कि मुश्किल पिच पे डेब्यू करवा दो, मरवाओ इसको, बाहर करो, ईशान को लेके आओ. सो ये चीजें नहीं होनी चाहिए. आई थिंक जिस तरीके से सूर्या खेल गया वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप फाइनल, और जो अभी ईशान को बैक किए जा रहे हैं, आई थिंक जितेश शर्मा डिजर्व्स मोर चांसेस. इवन शिवम दुबे कोई भी मैच नहीं खिलाया, हार्दिक पांड्या को कोई रिप्लेसमेंट ही नहीं तैयार करते, फिर बोलते हैं भाई एक ही प्लेयर है, एक ही प्लेयर है, और अब उसको साउथ अफ्रीका सीरीज में भी नहीं है. सो इट्स लेट्स सी क्या होता है, लेट्स सी. और कोई सरप्राइज आ सकता है? डू यू एक्सपेक्ट इन द स्क्वाड? सरप्राइज तो आई डोंट थिंक कोई ऐसा सरप्राइज अब है. इन्होंने सारे नए बच्चों को तो ट्राई कर ही लिया है. एक दो जो हो सकते थे, जैसे शिवम दुबे है, इसको इन्होंने खिलाया ही नहीं, उसको ट्राई कर सकते थे. राहुल तेवतिया एक बड़ा अच्छा ऑलराउंडर है जो फिनिश भी करता है. ऑलराउंडर मतलब बॉलिंग नहीं करा रही गुजरात से, लेकिन उसे करानी चाहिए. उसको अभी तक ट्राई नहीं किया है. ही इज ऑल्सो वेरी गुड. सो सरप्राइज तो आई डोंट थिंक दे विल स्प्रिंग अ सरप्राइज, बट let's hope for the best. I hope they put back in as many young players as possible. Sounds awesome. This was a fantastic podcast, Sushant. Thank you so much for coming on. Any last few words that you'd like to share with your audience? Nothing, yeah. Just be happy. Just keep supporting us. And anybody who's dreaming to be an entrepreneur, let me tell you, it's a very challenging ride, but it's sort of the most gratifying experience that you can have. You know, it's an amazing experience. So I would advise everybody to go for it and just live your life, enjoy it. That's it. Thank you, Sushant. Thank you for your time.